नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। नेशनल खबर पे आपने हिम्स के बारे में और हिम्स मेरठ के बारे में कई सारे इंटरव्यूज़ और पेशेंट रिव्यूज़ देखे होंगे। आज हम आपको इस प्रोग्राम में कुछ नया दिखाते हैं, यानी कि उन एक्सपर्ट से मिलवाते हैं जिन्होंने 3 महीने तक ट्रेनिंग ली है हिम्स में। और यानी कि एक कोर्स जो 3 महीने का कोर्स था सर्केडियन क्लॉक एंड आयुर्वेदा पंचकर्मा, उसमें 3 महीने की ट्रेनिंग ली है और उस 3 महीने में उन्होंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की, क्या क्या चीज़ें सीखी, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर कुल 21 ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिनके एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे और उन्होंने कैसे जो बीआरसी का प्रोटोकॉल है उसे फॉलो किया और आखिर क्यों वो इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करने पर मजबूर हो गए। ये सारी चीज़ें आज हम आपको इस प्रोग्राम में बताते हैं। Tell me, first of all, tell me about yourself और आपकी प्रैक्टिस के बारे में। So my name is Ashish and I've been working as rehabilitation instructor and a medical nutritionist for last 5 years in Delhi. Delhi, yeah. अच्छा, तो यहाँ पर आपका आना कैसे हुआ? कहाँ से माइंडसेट आया कि मुझे बीआरसी के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है या फिर इस कोर्स को ज्वाइन करना है? Okay. So approximately 4 years back I used to have autoimmune issues, okay? So I didn't have hair over my head. I got alopecia areata. So which made me lose all my hairs and then I was having boils all over the body and which no doctor could fix it. So I was going to here and then if somebody says go to that hut, there's a Vaidya sitting there and he could heal you because I got the result. So I went there and just tried that thing and nothing happened for 4 years. By the time I changed my diet, suddenly I saw within 3-4 months my old hair came back. Okay. The boils all over my body that just disappeared, which was just not happening by medication at all. Okay. So much of frustration, then you feel like, okay, let's die. Then suddenly there's a hope. You know, then. Right. So many negative thoughts, right? Okay. So can you share with us your experience in this 3 months जो आपने patient के साथ किया या इस training के दौरान जो ऐसा आपका experience रहा है उन सारी चीज़ों? So what generally happens when you try everything like diet and all, but still there are some cases where you're not being able to see the results. So there you need something extra, something like which is edging over. So then at that time when you add certain therapies, they made like a day and night difference. So that happens with my mother. So she was having diabetes and all. So she got recovered of everything, but there was a heart palpitation which was just not going. But the time you add such therapies, the thing disappear, right? Right. Yeah, it's like that. So what is your future planning about this protocol और इस जो आपने ये पूरा कोर्स किया है इसको लेकर आपका future planning क्या है? Okay, my future plan is to be in the health industry only, okay, and just to help more people and just liberate them from this medical industry so that they can by themselves sitting at the home they can be their own doctors. Okay. एक सवाल मेरा आपसे बस आखिरी सवाल और होगा कि एज अ यूथ मैं भी हूँ लेकिन आप भी हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर आयुर्वेद के बारे में नहीं सोचती या हमारे यूथ्स जो हैं आजकल की जो जनरेशन है वो नहीं सोचती है। सो आपने क्यों सोचा इसके बारे में कि मुझे आयुर्वेद या नेचुरोपैथ की तरफ जाना चाहिए? If you put little bit of critical thinking into it, you will realize you're taking medicine, you're not getting healed out of it, but you're still going to the doctor, you're still paying, okay? Most people don't have this perspective to see it. And most people don't even have solution for that thing. And nobody's there to educate them. That's why it becomes our responsibility to educate them. So I could see this Dr. BRC could educate us and I could take the education nicely. So that's why I thought, let's. Okay. Yeah. Thank you so much for joining me. Welcome.